Hello and welcome to this channel of investment and income. Some people have asked me to speak in Hindi also in between. So some sentences or some vital information I might talk in Hindi also. Today's topic is investment in index. Why I have done this video today is, if you decide to do that, then you can, from the new financial year, you can plan your activity regularly. Since a few months I have posted this regularly, why and how one can invest in index, and why investment in index can be considered safe, replacing the bank FDs. See, what happens is, people invest in bank FDs or in company FD because of three primary reasons. One, they invest in public sector banks thinking that it is government, so anything going wrong with the bank, the government will bail the bank out. Second is, like gold, it's your FD, it has tremendous liquidity. And third, people are dependent upon the monthly income from the savings from the investment in bank FDs. Now all these three things put together are a very lucrative proposition for an investor point of view. But at the other side, if you go and look, the maximum the bank FDs, even if a person is senior citizen, will offer from 6.2 to 6.4, differing from bank to bank or the period you select. India and the world is going through a high inflation level. इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बहुत ही बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है. हिंदुस्तान जैसे देशों में, जिसमें कि हम बहुत इंपोर्ट ऑयल डिपेंडेंट है, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली एडिबल ऑयल्स. तो कमिंग बैक टू द point that the banks will offer you 6.2 to 6.4 as FD return, and the inflation itself is 6.2 to 6.4. If you consider the CPI, the consumer price index, अगर WPI लेते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, मगर वो जाने देते हैं, अपन खाली CPI लेते हैं. बैंक FD के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगता है, इट इज़ नॉट टैक्स फ्री. So on the whole, if you consider the inflation and the taxability, depending on which bracket you are getting negative return in bank FDs. Still, can somebody recollect all the bank FD, all the amount, and put it in index? No, not necessarily. You can put a substantial amount, or whatever amount, at least 50% of the capital that is at your disposal in bank FD. And the rest you can do as investment in index. Now, how it is to be done, it is going into depth, which I will cover sometime in future. But I'll complete the basic nuances of this topic today. Another thing is, people are not comfortable with investing a large amount in stock market because of past failures, past experiences. They have been dependent upon tips from people who are not qualified to give, and those share stocks have tanked very badly. Another real factor is, there are really good stocks, supposing Sun Pharma or Tata Motors. They have risen from the recent fall very fast in the last one and a half year, but still they are only halfway. कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है या सन फार्मा है, उन्होंने अभी भी जो भाव बढ़े हैं वो खाली 50% तक ही पहुंचे हैं. जो पीक से गिरे हैं उसकी खाली 50% तक ही पहुंचे. तो पीपल वो इन्वेस्टेड इन द टॉप, जो बहुत ऊपर के भाव में जिन्होंने खरीदा होगा, उनके लिए तो अभी बहुत लंबा रास्ता है बाकी वो पॉइंट तक भाव आने के लिए. सेकंड एग्जांपल आई गिव इज हिंदुस्तान लीवर एंड नेस्ले. These two companies are one of the old trustworthy companies. They are the bluest of the blue chip that is available on the Indian stock market right now. But after the COVID and after the rise in index, and in many companies have given the return from the low of March 2020 afterwards, within a year and a half,
they have given a return of 200%, some have given 300%, some have given 150%. मगर ये दो कंपनी जिसपे बहुत ही भरोसा है, हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले, उन्होंने इंडेक्स जितना भी भाव नहीं बढ़ा है लास्ट 2 साल में, उसको कहते हैं अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स. मीन्स दोज आर ट्रस्टवर्दी कंपनीज बट स्टिल दे आर अंडर परफॉर्म. So coming back to the point is people do feel it requires expertise, it requires everyday following, it requires somebody's knowledge, it requires you to be a member of the fund house who is investing on your behalf, only then it is possible. For such a situation, इस हालातों में कोई छोटा इन्वेस्टर है वो इंडेक्स में सेफली कर सकता है निवेश, इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स, part of the bank FD or the floating capital one gets in and out, so that the average return from the index and the bank FD both together at least outbeats the inflation by 2 times. आप नॉर्मल मान सकते हो कि अगर इंडेक्स में करते हो आप निवेश, investing in index. See, index traditionally has given in the long run a return of 14 to 16% if you see Nifty or BSE. But if you do it just a little wisely, you can easily get a return of at least 3 times the bank FD. And it is not taking a risk. Why it is not taking a risk? मैंने पोस्ट में लिखा है बहुत बार, इंडेक्स जीरो नहीं होता है, इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता है. और इंडेक्स के अंदर में सिलेक्शन ऐसी होती है कंपनी की, अल्टीमेटली वो विनर्स ही है. जो ज़्यादा भाव जिसका बढ़ेगा उसका वेटेज बढ़ेगा, जिसका भाव गिरेगा उसका वेटेज गिरेगा. जो कंपनी की अमुक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल है या उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक इंडेक्स में आ जाएगी. और जो कंपनियां सही काम नहीं कर रही है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, वो इंडेक्स से बाहर चली जाएगी. कंपनियां आएगी, कंपनियां जाएगी, बट द इंडेक्स विल रिमेन इन इट्स ओन. कोरोना के टाइम पे जब मार्केट गिरी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020, when the markets fell during the peak corona period worldwide in the Indian market in January, February and March, the correction from the top was 40%. I'm not saying it was more, it was less, it was 40%. The same amount of correction, a little bit more than that, was last seen in the 2008 market crash worldwide. इस तरह का करेक्शन 40% का और उससे ज़्यादा 10 साल में एक बार आता है. 2008 में आया, फिर 2018 छोड़ो, मतलब 10 ही साल पकड़ो, 2020 में आया. उसको छोड़ के जो करेक्शंस आते हैं मार्केट में, वो 10 से 15% इंडेक्स का करेक्शन होता है साल में, करीब 3 बार या 4 बार. तो मेजर करेक्शंस जो फॉल आते हैं, oh, I will repeat it once again, it comes only once in 10 years, and the regular corrections are 10 to 15%, about 3 to 4 times in a year. Now, if that is why I said if done wisely, means if you take the advantage of the rise and the fall, and go on investing in index, the index will never get zero, but you will get at least 3 times the return than what you get in bank FDs. That is why it is safe. Improve upon your income, increase your income. आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, कोई पर्टिकुलर शेयर में पैसे नहीं डाल रहे हो, आप मार्केट में डाल रहे हो, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और वो सेफ रास्ता है. अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ दुविधा है समझने में, आपके कुछ प्रश्न है, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी. थिंक ओवर इट, टेक अ वाइज डिसीजन.